Historians have documented the refusal of colonial courts to interfere in cases involving socio-religious custom, even if the rights of the marginalized were violated. With the birth of constitutional democracy, the culture of reluctance was replaced by a call for a dedicated judiciary to protect the rights of citizens. All judges across the courts in India, ranging from the district courts to the Supreme Court, must reflect upon the constitutional vision of securing justice, equality, and liberty. There is a need for us to introspect on our actions and decisions and to question our own prejudices and preconceptions. For until we open our minds to multiple views of persons with varied lived experiences, we would be lacking in our role as judges. An institution thrives with time only when it functions democratically. I believe that as the Chief Justice of India, it is my responsibility to collaborate and consult my sister and brother judges at the Supreme Court, the Chief Justice and the judges of the High Courts, members of the District Judiciary, and the stakeholders of the institution. It is crucial that we tap on the experience of the diverse section of people who are part of the judiciary. Their knowledge and understanding would undeniably strengthen the institution. That is why it is all the more important that the representation of marginalized communities and women in the legal profession and the judiciary is enhanced. The Indian courts have been at the forefront, protecting the rights of the marginalized groups and upholding the rule of law. The jurisprudence that has emanated from our courts in India has influenced decisions in far-flung nations as diverse as Australia, Kenya, South Africa, Jamaica, Uganda, Fiji, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Malaysia, and Singapore, which share similar problems. In a nation as large, diverse, and graded as ours, the paramount challenge that the judiciary as an institution faces is to ensure that the justice delivery system is accessible to everyone. Challenges require dedicated actions. The Indian judiciary has been adopting several measures of institutional reforms with a single objective, and I borrow the celebrated phrase of American civil rights activist Dr. Martin Luther King Jr. to describe it: to bend the arc of the moral universe towards justice. We have been adopting technology to improve the working of courts. It is of supreme importance and necessity that the courts are remodeled to reach out to the people instead of the people reaching out to the courts in their quest for justice. To ensure that the courts reach out to the people, it is essential that the process of litigation is simplified and made citizen-centric. Though the judiciary's engagement with technology gained prevalence during the COVID-19 pandemic, we must not dismantle the infrastructure but build upon it. And I would earnestly request the Chief Justices of the High Courts to ensure that the technological infrastructure on which public funds have been spent is not dismantled but strengthened further. The Supreme Court now functions in a hybrid mode with both online and offline courts, which enable lawyers and parties in person to appear from different parts of the country. Though the Supreme Court is located on Tilak Marg, the Supreme Court is a Supreme Court for the entire nation. As the Chief Justice, I'm attempting to adopt technology-based services in the listing of cases and court hearings so that institutional flaws such as delays in listing and hearing can be removed from our vocabularies. The E-Committee of the Supreme Court of India uses technology to make the justice delivery system more accessible and citizen-centric. The National Judicial Data Grid is a repository of 77 lakh judgments of the High Courts that are available to every citizen free of cost. Additionally, various citizen-centric services are employed to reach out to the people at the grassroots level. While technology has ably aided us in ensuring functionality of the judiciary during the pandemic, technology must be augmented with institutional reforms to resolve the chief issues of access to justice. The first interface of the people with the judicial system
is the district judiciary. It is thus of paramount importance that the district judiciary is strengthened and supported. The district judiciary must be lifted from the mindset of being a subordinated judiciary. Today, the Honorable Prime Minister of India is present here to launch the e-initiatives, namely the virtual justice clocks, the Justice IS mobile application 2.0, digital courts, and S3 VAS websites of district courts. The virtual justice clock is a platform where information available through the National Judicial Data Grid is made available to the public. Virtual justice clocks for the District Judiciary of India are a real-time informative public dashboard which provide information in 3 levels, covering all the states, districts, and court establishments in India. The dashboard provides real-time status which is refreshed and updated every 15 minutes. The Justice Mobile App 2.0 is developed for the judges of the district courts in the country. The app is provided to judicial officers to monitor pendency and disposal of his or her court at the handset 24/7. Digital Courts is a green initiative of the Indian judiciary in the form of a desktop app that has been developed to make courts paperless or digital. It provides an easy-to-view case files documents while sitting at home. Judges can view all the case-related pleadings, charge sheets, court orders of both civil and criminal cases which aim at making the court paperless. And finally, the initiative's S3 VAS website. The acronym S3 VAS stands for Secure, Scalable, and Sugamya Website as a Service. Through the Digital Court and S3 VAS initiatives, the websites of district courts are being upgraded from the existing system to a platform which is secure, scalable, and accessible. Content published on the website is accessible so that even persons with disabilities, including visual disabilities, would be able to access the information using assistive technologies. These initiatives reflect upon the commitment of the Indian judiciary towards providing access to justice to our own citizens. Our endeavor is to enhance access to justice. This must not be understood in narrow terms of enriching the experience of those who are already in possession of access, but by reaching out to those groups and communities that are denied basic rights. Access to justice must be defined in the expression of upholding the faith and perception that the general public holds in the legal system. I can assure everyone that the initiatives launched today are a part of a larger technological and institutional advancement of the Indian judiciary to ensure that even the most disadvantaged communities in the country do not stumble while reaching out to justice. Before I conclude, I would like to emphasize on the relevance and constitutional values, not just to the judicial branch, but to all institutions and sections of the society. The evolution of a society can only ensue on the foundations of liberty, equality, and fraternity, the trinity of values highlighted by Dr. Babasaheb Ambedkar in his last address to the Constituent Assembly. Therefore, I appeal to the young minds to reflect on the social realities of India and work towards achieving fraternity by dedicating themselves to the cause of justice in whatever way possible. Sometimes, change happens by small acts of kindness. The heart and the soul of law, as it is administered in our courts, is our sense of compassion to our citizens. With that, I thank you. Jai Hind. Thank you, sir. May I now request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to launch the e-initiatives of the Supreme Court of India as described by the Honorable Chief Justice of India.
E-Courts is a mission mode project of the Government of India and implemented by E-Committee, Supreme Court of India. The following new initiatives under E-Courts project have been conceived. Virtual Justice Clock, Justice Mobile App 2.0, Digital Court, S3 VAS websites, Virtual Justice Clock. It is a real-time public dashboard which provides information of institution, disposal, case clearance rate, age-wise pendency, and listed cases at 3 levels, that is, national, state, and district. Now, citizens can access information from anywhere on the websites of the district court without physically visiting court premises. It is a step forward to fulfill the aim of transparency and accountability in judicial domain. Justice Mobile App 2.0. The app is provided to judicial officers to monitor pendency and disposal at fingertips. It is a tool available to judicial officers for effective court and case management. Now, the access to this app has been extended to the Honorable Judges of the Supreme Court, High Courts and Principal District Judge of District Judiciary. It generates alerts and provides statistical information of pendency and disposal. Justice Mobile App will facilitate policy making for speedy dispensation of justice and easy access to justice. Digital Court. A green initiative where court records will be available to the judge in digitized form. Being integrated with e-filing and ICJS, the case papers e-filed by the litigants, so also the charge sheets, FIR sent by police machinery on ICJS platform will be available to the court 24/7. Digital Court provides multiple annotation options for judges to digitally read and add comments on case files through various digital tools. Customized reports can be generated through combination of various search criteria. Unique feature of working in offline mode is also made available. Digital court environment is cost-effective, safe and secure mechanism which will enhance the efficiency and ease of doing business in judicial domain. S3 VAS. Secure, scalable and Sugamya website as service. S3 VAS is a framework that empowers the district administration to generate, configure, deploy and manage websites for publishing specific information and services related to district judiciary. The websites comply with the mandatory guidelines of digital accessibility. 15 district court websites are ready to migrate to S3 VAS framework and all district court websites will soon be migrated on S3 VAS platform. Let's join hands to build a futuristic judiciary to serve all. On this special occasion, may I request the Honorable Chief Justice of India to present a memento to you, the Honorable Prime Minister of India. May I now request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to deliver the inaugural address. भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरण जी, जस्टिस श्री संजय किशन कौल जी, जस्टिस श्री एस. अब्दुल नजीर जी, कानून राज्य मंत्री श्री एस.पी. सिंह बघेल जी, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमण जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री विकास सिंह जी, सभी उपस्थित न्यायाधीशगण,
सम्मानित अतिथिगण, देवी और सज्जनों, नमस्कार। आप सभी को और सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1949 में ये आज का ही दिन था जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नई भविष्य की नींव डाली थी। इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साहब आम्बेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को, सभी संविधान निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। बीते 7 दशकों में संविधान की विकास और विस्तार यात्रा में लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अनगिनत लोगों का भी योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर देश की ओर से उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथियों, आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे विश्व की नजर भारत पर है। भारत के तेज विकास, भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। एक ऐसा देश जिसके बारे में आशंका जताई जाती थी कि वो अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, जिसके बारे में कहा जाता था वो बिखर जाएगा, आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है। और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। यही भावना हमें वैशाली के गणराज्य में भी दिखती है
वेद की ऋचाओं में भी दिखती है। महाभारत में भी कहा गया है, लोकरंजनम एव अत्र राज्ञाः धर्मः सनातनः सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चार्जवम। अर्थात लोक को यानी नागरिकों को सुखी रखना, सच्चाई के साथ खड़े होना और सरल व्यवहार, यही राज्य का व्यवहार होना चाहिए। आधुनिक संदर्भ में भारत के संविधान ने देश की इन सभी सांस्कृतिक और नैतिक भावनाओं को समाहित किया हुआ है। मुझे संतोष है कि आज देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में अपने इन प्राचीन आदर्शों को और संविधान की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। प्रो पीपल पॉलिसीज की ताकत से आज देश और देश का गरीब, देश की माताएं बहनें, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। सामान्य मानवीय के लिए आज कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। टाइमली जस्टिस के लिए हमारी जुडिशरी भी लगातार कई सार्थक कदम उठा रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किए गए ई इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने का अवसर मुझे मिला है। मैं इस शुरुआत के लिए और ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कर्तव्यों की बात पर बल दिया था। ये हमारे संविधान की ही भावना का प्रकटीकरण है। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे अधिकार हमारे वो कर्तव्य हैं जिन्हें हम सच्ची इंटीग्रिटी और डेडिकेशन के साथ पूरा करते हैं। आज अमृतकाल में जब हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करके अगले 25 वर्षों की यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो संविधान का ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है। आजादी का ये अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल है। चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज भारत के सामने नित नए अवसर बन रहे हैं। भारत हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक सप्ताह के बाद भारत को G20 की प्रेसिडेंसी भी मिलने वाली है। ये बहुत बड़ा अवसर है। हम सभी टीम इंडिया के रूप में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, भारत का योगदान विश्व के सामने लेकर जाएं, ये भी हम सभी का सामूहिक दायित्व है। भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर जो पहचान है, हमें उसे और सशक्त करना है। साथियों, हमारे संविधान की एक और विशेषता है जो आज के युवा भारत में और भी प्रासंगिक हो गई है।
हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। आज स्पोर्ट्स हो या स्टार्टअप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है। इसलिए आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है वो संवैधानिक विषयों पर डिबेट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बने। जब हमारा संविधान बना तब देश के सामने क्या परिस्थितियां थी, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था। हमारे युवाओं को इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इससे उनके संविधान को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी। इससे युवाओं में इक्वालिटी और एम्पावरमेंट जैसे विषयों को समझने का विजन पैदा होगा। उदाहरण के तौर पर हमारी संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी और उनमें एक दक्षयानी वेलियाउधन वो महिला थी जो एक प्रकार से वंचित समाज से निकल करके वहां तक पहुंची थी। उन्होंने दलितों, मजदूरों से जुड़े कई विषयों पर महत्वपूर्ण इंटरवेंशंस किए। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ऐसे ही और कई महिला सदस्यों ने भी महिलाओं से जुड़े विषयों पर अहम योगदान दिया था। इनके योगदान की चर्चा कम ही हो पाती है। जब हमारे युवा इन्हें जानेंगे तो उन्हें अपने सवालों का जवाब भी मिलेगा। इससे संविधान के प्रति जो निष्ठा पैदा होगी वो हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को और देश के भविष्य को मजबूत करेगी। आजादी के अमृत काल में ये भी देश की एक अहम जरूरत है। मुझे आशा है संविधान दिवस इस दिशा में हमारे संकल्पों को और अधिक ऊर्जा देगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। May I now request the Honorable Shri Justice S. Abdul Nazir, Judge, Supreme Court of India, to propose a vote of thanks. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and other dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. It is indeed a matter of great honor and pride for me to propose the vote of thanks on the 73rd anniversary of the Constitution of India. The date today, that is 26th November, holds great significance for every year. It reverberates the beautiful and inspiring journey that we, the people of India, have traveled thus far since 1949, when the Constitution of India was adopted. Fast forward 73 years, today we stand as the largest sovereign, socialist, secular, democratic republic in the world, where the ideals of justice, liberty, equality,
and fraternity are secured to all the citizens of India. This could not have been possible without the foundational guidance of Dr. B.R. Ambedkar and the monumental efforts of the members of the Constituent Assembly who drafted the Constitution in such manner and style that it not only recognizes the socio-economic and political rights and interests of 1.3 billion citizens, but also provides great adaptability to accommodate the changing needs of the times ahead without compromising on its basic structure. Swami Vivekananda once said, and I quote, "Every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, a destiny to reach. The mission of India has been to guide humanity," unquote. In our mission of upholding the constitutional morality and values, we must arise, awake, but never stop. We, in the capacity as judges, strive to streamline our justice delivery system to make it more efficient and accessible for all, while ensuring that the judicial institutions are at the forefront when called upon to adopt changes with time and technology. I extend my hearty vote of thanks to Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, Dr. D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, Shri Kiran Rijiju, Union Minister of Law and Justice, Shri Baghel ji, Minister of State, Shri R. Venkatramani, Attorney General for India, and Shri Vikas Singh, President, Supreme Court Bar Association, for gracing today's occasion by sharing their valuable thoughts. I thank each one of you for participating in today's function. Thank you all. Jai Hind. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण सुप्रीम कोर्ट से, जहां संविधान दिवस का मुख्य कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च traveling with Prime Minister Modi. I'm changing the contours of this conversation now. You've been speaking about meeting him when you were an ambassador and he came as a visiting chief minister, and that was sort of a view from the outside. What's it like now from the inside? What does Team Modi do that includes you now while planning for such high stakes meetings, for example? No, so what's the question in a sense? I mean, what is the process, or what is it like? What's the process? What is it like to be? Well, look, I mean, you know, he's been able to establish a lot of personal connections with a lot of world leaders. They're reciprocating and saying that he is an amazing leader and this, that, the other. You've seen the headlines and we've all read them. So there's that aspect of it. How much of your outreach, your planning is centered around his views? How receptive is he to the policy experts? How does it all work? Well, that's very complicated and probably a very long story, but I'll give you a kind of sports analogy, if I might. Okay. You know, even if you're a natural player, perhaps especially if you're a natural player, you have to spend a lot of time on the nets to get your game right. You know, now in the case of the Prime Minister, yes, I mean, he has a flair, he has an ability to connect, he has a persona, he has a view, he has a tremendous expressiveness. All of that is true. You know, that's the bit which all of you see. But
he is also an extremely well-prepared person, very thorough, very hardworking. So, I mean, since we are talking Bali, let us say, typically it would be, okay, before you hit a conference, I mean, weeks before that, you would already have started preparation. This is where we're going. Those are the people we are meeting. These are the big issues. So, how do you prepare for those? Typically, a lot of our time on the plane is spent, there's actually a conference kind of table on the plane. We actually, you know, sometimes people ask me, so why do you look so tired getting off a plane? Mostly because a lot of it is spent on that conference table. And I actually like my sleep. And he does a lot of, you know, pre-meeting, post-meeting, because it's not just like a meeting is over and we are done with that. I mean, it is like, okay, very quick, how did it go? You know, what is the further steps? So the continuous brief, debrief, correct, prepare, update, it's a sort of, it's a process. And it is something that keeps you on the toes, because in order for us to work with him, we have, you know, there's a back end to what we do. So in a sense, I would say, you know, there's a kind of a team sort of system that also he harnesses very well. I mean, he's by nature very much of a team person. And quite honestly, I would say perhaps his strength that I have seen is a willingness to actually ask a lot of questions and to listen to a lot of things. He's a very good listener. Never ever forget that. Are shortcuts to brightness harsh on your skin? New Cetaphil Bright Healthy Radiance with gentle bright technology, clinically proven to illuminate skin and gradually correct dark spots. The healthy way to visibly brighter skin in just 4 weeks. தொடங்கி வைக்க வருகை புரிந்திருக்கும் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை தமிழ் மக்கள் சார்பாகவும் காசியிலே வாழுகிற தமிழ் மக்கள் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். नमस्कार। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित उत्तर और दक्षिण भारत का संगम काशी तमिल संगमम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सहृदय स्वागत करते हैं। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, माननीय राज्यसभा सांसद श्री इलिया राजा जी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री पौन राधाकृष्णन जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय श्री सुधीर जैन जी, IIT मद्रास के निदेशक माननीय प्रोफेसर वी कामकोटी जी और तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री के अन्नामलाई जी, आप सभी का आदरपूर्वक स्वागत। और साथ ही स्वागत करते हैं माननीय गुरुजन आदिनाम जी का भी, और दिल खोल कर स्वागत करते हैं सभी तमिल मेहमानों का और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और महानुभाव का भी सहृदय अभिनंदन। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை வரவேற்று மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச ஆளுநர் திருமதி ஆனந்திபென் பட்டேல் அவர்களையும், மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் திரு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களையும், மாண்புமிகு மத்திய கல்வி அமைச்சர் திரு தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களையும், மாண்புமிகு மத்திய தகவல் ஒளிபரப்பு மத்திய இணை அமைச்சர் திரு எல் முருகன் அவர்களையும், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திரு இளையராஜா அவர்களையும், மேனாள் மத்திய இணை அமைச்சர் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களையும், காசி இந்து பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் திரு சுதீர் ஜெயின் அவர்களையும், சென்னை தொழில்நுட்ப கழக இயக்குனர் முனைவர் காமகோட்டி அவர்களையும், தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா பார்ட்டியின் தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக வருகை புரிந்திருக்கிற
ஆதீன கர்த்தர்களையும் அனைவரையும் மீண்டும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். मान्यवर, सदियों पुरानी संगमम की परंपरा को पुनर्जीवित करने की माननीय प्रधानमंत्री जी की अप्रतिम कल्पना आज काशी तमिल संगमम के रूप में साकार होने जा रही है। तमिल समाज, तमिल संस्कृति और काशी के साथ उनके काल अतीत प्रगाढ़ संबंधों को रेखांकित कर माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की महान सोच का ही एक आयाम है काशी तमिल संगमम। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு மத்திய கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் தமிழ் பாரம்பரிய முறையில் அங்கவஸ்திரம் அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்கி இப்போது சிறப்பிப்பார்கள். मैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। தமிழ் மக்களின் உள்ளத்து களிப்பை தெரிவிக்கும் வகையில் காசி தமிழகம் நெடுங்கால தொடர்பு என்னும் நூலினை மேனாள் மத்திய இணை அமைச்சர் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் சார்பாகவும் தமிழ் மக்களின் சார்பாகவும் தற்போது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களிடத்தில் வழங்குகிறார்கள். और अब माननीय श्री पौन राधाकृष्णन जी से सादर आग्रह कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को पुस्तक काशी तमिलागम कनेक्ट भेंट करें। इस पुस्तक में काशी और तमिलागम के बीच इतिहास के विभिन्न बिंदुओं के आधार पर विभिन्न तथ्य और घटनाएं संकलित की गई हैं। 3 भाषाओं में इस पुस्तक को माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। महर्षि अगस्त्य के तमिलनाडु भ्रमण से लेकर काशी के तमिल समाज से जोड़ने वाले विभिन्न प्रसंग इनमें सम्मिलित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। மாண்புமிகு தகவல் ஒளிபரப்பு, மீன்வளம், கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறைகளுக்கான மத்திய இணை அமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களை வரவேற்புரை ஆற்றுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம். और मैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। இந்த புனித பூமியில வாரணாசியில காசி தமிழ் சங்கமம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற பாரதியாருடைய கனவை நனவாக்குகின்ற இந்த காசி தமிழ் சங்கத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு மரியாதைக்குரிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என வரவேற்று காசி தமிழ் சங்கமம் காசியில நம்மளுடைய உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்த மாநிலத்தில் சிறப்பான ஒரு வரவேற்பை வழங்கியிருக்கின்ற மாண்புமிகு கவர்னர் அவர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய முதலமைச்சர் அவர்களையும் மாண்புமிகு மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மதிப்பிற்குரிய திரு தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களையும் மரியாதைக்குரிய திரு இளையராஜா அவர்களையும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஐயா இளையராஜா அவர்களையும் மாண்புமிகு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களையும் பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியினுடைய வைஸ் சான்சலர் திரு சுதீர் ஜெயின் அவர்களையும் சென்னை ஐஐடியினுடைய டைரக்டர் திரு காமக்கோடி அவர்களையும் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களையும் இங்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற ஆதினங்கள், பெரியோர்கள், தாய்மார்கள் உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வரவேற்று காசிக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய பந்தம் இருக்கிறது. அந்த பந்தம் ஆண்டாண்டுகளுக்கு முந்தைய பந்தம்.
அந்த பந்தம் நாம் ஆண்டுகள்ல கணக்கிட முடியாத ஒரு பந்தம். பாண்டிய வம்சத்தை சேர்ந்த அதிவீர ராமபாண்டியன் காசிக்கு யாத்திரையாக வந்தார்கள். அவர் இங்கு திரும்பி சென்ற பிறகு தென்காசியில மிகப்பெரிய ஒரு சிவாலயத்தை நிறுவினார்கள். அதே போல அவர்களுடைய மூதாதையர்கள் நம்மளுடைய சிவகாசியில ஆலயத்தை நிர்வகித்தார்கள். ஸ்கந்த புராணத்தின் தமிழ் பாடல்களாக காசி காண்டம் அவர்கள் எழுதி காசிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய உறவை இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கும் விதமாக நாம் வாரணாசி நாம் வழக்கத்தில் சொல்லுவோம். நம்மளுடைய ராமேஸ்வரம் போயிட்டு காசிக்கு வருவோம், காசியிலிருந்து ராமேஸ்வரம் வருவது, இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய அந்த ஒரே பாரதம், உன்னத பாரதம், தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரம், தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாடு இன்றைக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அருமையான தமிழ்நாடு கலாச்சாரம் மட்டுமின்றி ஒரு கல்வியினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கல்வி ஸ்தாபனம் பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி இங்கே இருக்கிறது. அவர் தமிழ்நாட்டினுடைய புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையை இன்றைக்கு இந்த எடுத்துக்காட்டும் விதமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இணைப்பு நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சி இருக்கிறது. நம்மளுடைய பாரதியார் அவர்களுக்கு, எங்களுடைய பாரதியார் சுதந்திர போராட்டத்திற்காக வித்திட்டவர், பெண் அடிமையை எதிர்த்தவர், பெண் சுதந்திரத்தை பாடுபட்டவர். அவருக்கு பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டியில ஒரு இயற்கையை கொடுத்து நம்மளுடைய பாரதியார் அவர்களுக்கு பெருமை சேர்த்த நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்களுக்கு தமிழக மக்கள் சார்பிலும் தமிழ்நாட்டின் சார்பிலும் அவர்களுக்கு நன்றியை சொல்வதோடு இந்த ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் மூலியமாக தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரம், தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாடு, தமிழ்நாட்டினுடைய காஞ்சிபுரம் புடவைகள், பனாரசினுடைய புடவைகள் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இணைப்பு பாலமாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம். பெரியவர்களை, ஒரு மாதம் கார்த்திகை மாதம் இந்த நிகழ்ச்சியானது முழுவதும் நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வருகை தந்திருக்கின்ற பெரியோர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். काशी के साथ तमिल का एक बहुत बड़ा पारंपरिक है। रामेश्वर क्षेत्र से मिट्टी लेकर काशी की गंगा में डालकर फिर वापस रामेश्वर में रामनाथ स्वामी को अभिषेक करना है, यही काशी यात्रा का पूर्ति। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री के अभिनंदन और धन्यवाद देकर माननीय केंद्र राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन जी स्वागत भाषण दिया। காசிக்கும் தமிழகத்திற்குமான தொடர்பில் இசைக்கு இணையற்ற பங்குண்டு. ஹிந்துஸ்தானி இசையும் கர்நாடக இசையும் ஒன்றுக்கொன்று சகோதர உறவு பூண்டவை. இங்கே மோகனம் என்றால் அங்கே பூபாலி, இங்கே சிந்து பைரவி என்றால் அங்கே பைரவி, இங்கே கேதாரம் என்றால் அங்கே நட்டபெஹாட், இங்கே தன்யாசி என்றால் அங்கே தனாஸ்ரீ. இப்போது இசையும் இசைகிற இந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தில் உரையாற்ற வருகிறார் இசை ஞானி இளையராஜா. तमिल संस्कृति में रचे बसे तमिल संगीत के स्तंभ माने जाते हैं राज्यसभा सांसद माननीय श्री इलैयाराजा जी। माननीय सांसद महोदय अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களே, மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச ஆளுநர் மற்றும் முதலமைச்சர் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய மத்திய அமைச்சர்களே, நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, காசி தமிழ் சங்கமத்தில் திரளாக பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கும் தமிழ் பெருமக்களே மற்றும் காசிவாசிகளே, உலகம் வியக்க பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தின் நிகழ்வுகளை காண வந்திருக்கும் திரளான பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை, மகிழ்ச்சியான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காசி நகருக்கும் தமிழுக்கும் எவ்வளவு தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை இங்கே விளக்கி அனைவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். பாரதியார் இங்கே 2 வருடம் இங்கே படித்திருக்கிறார். இங்கே படித்து அவர் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை, புலவர் பெருமக்கள் உரையாடியதை, அவர்கள் விவாதத்தில் பங்கு கொண்டதையெல்லாம் நேரிலே பார்த்திருந்து காசி நகர் புலவர்
இங்கே செய்யும் பேச்சுக்களை காசியில் கேட்க ஒரு கருவி செய்வோம் என்று இந்தியாவிற்கு எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லாத நேரத்திலே அவர் அந்த பாடலை பாடியிருக்கிறார். கங்கை நதிப்புறத்து கோதுமை பண்டம் காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறுகொள்வோம் என்று அப்பொழுதே அவர் வங்கத்தில் ஓடிவரும் நீரின் மிகையால் மையத்து நாடுகளில் பயிர் செய்வோம் என்று நதிகள் இணைப்பு திட்டம் வருவதற்கு முன்பே அவன் 22 வயதில் பாடிவிட்டு போய்விட்டான். அப்படியான பாரதியார் தன்னுடைய 9 வயது முதல் 11 வயது வரை 2 ஆண்டுகள் இங்கே இருந்து பயின்று அவர் அறிவு பெற்றிருக்கிறார் என்பது மிகவும் தமிழ் பெருமக்களுக்கு மிகவும் அரிய விஷயமாகும். அதேபோல் நீங்கள் அறியாத இதுவரை குறிப்பிடப்படாத ஒரு விஷயத்தை இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன். கபீர் தோஹாவளி பாடினார், 2 அடிகளிலே பாடுவது. அங்கே தமிழில் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் என்ற நூலை இயற்றினார் 2 அடிகளில், 2 வரிகளில். தோஹாவளியில் 8 சீர்கள் அமைந்திருக்கின்றன, திருக்குறளில் 7 சீர்கள் தான். முதல் அடி 4 சீர், 2ஆம் அடி 3 சீர். இந்த நிகழ்வுகளையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். இந்த 2 அடிகளில் பாடிய கபீர்தாஸ் ஆன்மீகத்தை பற்றி பாட, திருவள்ளுவர் உலக இயல்கள் பற்றி அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால் என்று 3 பால்களாக அதை 1330 பாடல்களாக எழுதினார். இன்னொரு விஷயத்தை, யாரும் குறிப்பிடாத விஷயத்தை இங்கே சொல்லுகிறேன். முத்துசாமி தீட்சிதர் இங்கேதான் கர்நாடக சங்கீதத்தின் மாமேதை என்று போற்றக்கூடிய மும்மூர்த்திகளில் ஒருவரான முத்துசாமி தீட்சிதர் இங்கே வந்து நிறைந்து பல இடங்களில் தேசாந்திரமாக பாடிக்கொண்டு சென்றவர். கங்கை நதியில் மூழ்கி எழும்பொழுது அவர் கையிலே சரஸ்வதி தேவி வீணையை பரிசளித்திருக்கிறார். அந்த வீணை இன்னும் இருக்கிறது, அருங்காட்சியகத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்படிப்பட்ட பெருமை மிகுந்த இந்த காசி நகரிலே தமிழ் சங்கமத்தை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்ற இந்த எண்ணம் நமது பிரதமர் அவர்களுக்கு எப்படி தோன்றியது என்பதை நான் மிகவும் வியந்து கொண்டிருக்கிறேன். மோடிஜி, I cannot express my feelings fully because the thought you have to make Tamil Sangamam in this புண்ணிய பூமி காசியிலே நடத்துவதற்கு உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஆலோசனை வந்தது என்பதை நான் வியந்து மகிழ்கிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு நீண்ட ஆயுளும் நிறைந்த புகழும் மென்மேலும் ஓங்குக என்று வாழ்த்தி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம்.